there is no tomorrow for these two clubs if they do not win this one. Welcome, ladies and gentlemen. You are watching the eISL Season 2 as we head on into the final fixture of the evening. It is going to be Odisha FC taking on Kerala Blasters FC. And I think we had a little bit of a chat about that in the previous segment where we touched upon how crucial this is because both of these teams are kind of on the bottom order, and now this is where it is a victory, and it's just not where you kind of settle with a draw. You have to on anyhow, whatever it takes, win this one. As we quickly take a look at the matchup and TT. The first match, 8-8 and Shubham, and the last one, Bhagya and Lokmani. What are your thoughts on that? आई थिंक शुभम एंड रेटनेट्स बहुत शानदार मैचअप है. ऑन द हैंड वाग्या एंड लोकमैन्यू, आई थिंक मुझे लगता है कि ये भी एक पावर पैक गेम होगा. हालांकि पॉइंट्स टेबल के ऊपर ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे नहीं है, लेकिन शायद कहने के जो है वो एक आउटकम जो हम लोग सोच रहे हैं, जो एक होना चाहिए मैच के अंदर, वो सब कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा. सो लेट्स सी क्या होता है. कोई भी प्रेडिक्शन मेरे तरफ से तो एटलीस्ट इधर नहीं रहेगा. वैसे आपका क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है इस मैचअप के ऊपर? It's quite difficult to say because I was just checking their last matchups. So it was against Hyderabad FC, and both managed to get a tie against them. So it's going to be very even. But on pen and paper, we know that Shubham and Lokmanu are just a tad bit stronger, but haven't really reciprocated in that manner. I mean, they have gone on to give some of the biggest upsets against some big clubs, which goes on to show the kind of a potential that they carry when they work in tandem with each other. And again, when you look at the contrary, it's Odisha FC sort of on a redemption arc where the start into this campaign was pretty lousy, but I think they've kind of managed to recover, where Nate has been very sturdy. Just that yesterday's hiccup, I'm pretty sure he must have overcome that. But co-op came, and that has improved for Odisha FC. And Vagya's stint of bad luck has finally been removed. So you're looking at an informed Odisha FC against an informed Kerala Blasters FC also. So we have seen, against Jamshedpur FC, Lokmani also showed some spectacular class there, beating them out. But today is one of those days, like we said, right? Considering the fact that Kerala Blasters FC have played one less game in comparison to Odisha FC. For Odisha FC, though, it's a must-win game, and the same for Kerala Blasters FC also. More for Kerala Blasters FC because they have to win the next 3 of the games, and the next matches are also going to be pretty difficult because they've got those matches against some big clubs. So a victory here would kind of give them that little bit of a morale, give them that support that yes, they can do it, and if they go on to win that and make it to the playoffs, this is going to be a dream run for them. For sure, no doubt on that. And especially इधर देखिए, इस जगह से अगर वो क्वालिफाई कर पाते हैं, दैट इनको रोकना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वो एक मोमेंटम इनको मिल जाएगा, उसके थ्रू वो आगे बढ़ते रहेंगे. लेकिन उसके लिए वो मोमेंटम क्रिएट करना होगा, जो कि अभी तक मिला ही नहीं है उनको इस पूरे इंटायर टूर्नामेंट के अंदर. तो कहने की ज़रूरत है उसको बनाने की, और इजी नहीं है. देखिए, हम लोग बोल तो दे रहे हैं कि या मोमेंटम बन जाएगा, देन क्या होगा, लेकिन मोमेंटम बनना होगा पहले, तो वो बनने के लिए अभी खेलेंगे. सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के ही लिए ये गेम, जैसे कि सब लोग को पता भी है, जितने भी फैंस इधर देख रहे हैं ओडिशा एफसी के भी एंड इसी के साथ केरला ब्लास्टर एफसी के भी, तो दोनों ही जो फैन बेस है उनको पता है कि कितना ज़्यादा क्रूशियल है ये मैचअप. सो आज आई थिंक मुझे लगता है कि ये गेम डायरेक्ट हम लोग जब जंप इन करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि इधर से कुछ भी प्रेडिक्ट करना, क्योंकि देखिए केरला ब्लास्टर एफसी की अगर बात किया जाए, शुभम तो लाइक वो अच्छे खेल ही रहे हैं पूरे थ्रू आउट द सीजन. अगर बात किया जाए 1-2 मैच छोड़ के वो हर एक मैच पे जीतने की कोशिश की है. लोकमेन्यू की अगर बात किया जाए, बीच में लाइक शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था उनके लिए, बीच में एक कमबैक हुआ था, कमबैक के बाद कहीं ना कहीं फिर से एक बार एक स्विच ऑफ होने वाला सिनेरियो बनता हुआ दिखा था आखिरी गेम पे. तो क्या वो एक बार फिर से अपने आप को जो है उस लेवल पे लेके आ पाएंगे, इधर से वो मैच जीत रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि भाग्य का भाग्य तो अभी वापस आ चुका है, वो तो पता ही है. ओडिशा एफसी. Yeah, I think for Odisha FC, the first game is going to be of the utmost importance because
Shubham, lately we've seen Kerala Blasters FC have changed their playing order. Right, earlier used to be Lokmanu, but this time I think what's going on for Kerala Blasters is that they get off to a winning start and they win the co-op, and the third game they can pretty much hit something like that, something like what Bengaluru FC have been approaching. And but for Odisha FC, I think it's a quite similar approach where they have got a majority of their wins with Nate, and then we've seen a drastic improvement even in their co-op game. And Bhagya, it all comes down. He's sort of been the wild card for his team, right? If he जैसे बोलते हैं ना, वो अगर चल पड़े तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वही वाली बात आती है. So now getting both these clubs into the picture. Both of these clubs have seen a lot of those dreadful days, which they've had to overcome. So much going on for them, because especially when you're kind of losing, when you're kind of in the bottom half of the table, that's where you start questioning yourselves. And more for Kerala Blasters FC, because you've got two of the players that are quite experienced, have also been a part of season 1 of the eISL, and they know how the pressure is high. But Odisha FC, they've been trying and trying and trying. Could this be one of those evenings where they can break through Kerala Blasters FC? We will fight that out in this first matchup between Nate and Shubham Tam Tam. As you can see, Shubham going pretty aggressive with that 4-2-4, and well, Kerala Blast. In fact, it is Nate pretty aggressive with that 4-4, and Shubham, interesting formation. He's got 5 men on back, quite defensive approach there. So we're gonna see a lot of attacking players coming in from Odisha FC. But the big question is, when does the Viper of eISL strike? So let's just get into the game and enjoy. यस एंड आई थिंक उसी के लिए सबके सब हम लोग वेट कर रहे थे, जस्ट एंजॉय करने के लिए इस गेम को. एंड या फाइनली उसी के साथ बजता हुआ विसल, बॉल रोल होना शुरू हो चुका है. लेफ्ट टू राइट ओडिशा एफसी, राइट टू लेफ्ट केरला ब्लास्टर एफसी. और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये मैचअप. नेट्स एंड शुभम तमतम दोनों ही अपने क्लब्स के लिए बहुत बहुत सारे विक्ट्रीज जो है वो निकाले हैं, लेकिन ओवरऑल मैचअप पे जाके वो उस तरीके से ख़त्म नहीं हुआ. लेकिन नेट्स की अगर बात किया जाए, जो उनका लास्ट गेम था वो कुछ खास गया नहीं. मुश्किल उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उसका कहने की इफेक्ट क्या इस गेम पे दिखेगा या फिर एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे वो देखना होगा. लेकिन अभी के लिए शुभम के पास बॉल. शुभम काफ़ी बेहतर तरीके से बॉल कंट्रोल भी करते हुए पोजीशनिंग इधर मेंटेन कर रहे हैं टुवर्ड्स रोड टू लीड. तो बेलिंगम 1-2 इस बार मौका मिलेगा, जगह मिलेगा एम्बापे, बट फाइनली माल्डिनी की तरफ से वो इंटरसेप्शन. नहीं तो शायद पहला गोल आता हुआ दिख जाता. Yeah, and yesterday's matchup against Genocide for Nate was kind of a little bit of a horror show towards the end, because both of them were looking pretty close, evenly matched up, and suddenly second half and Genocide just takes over, and Nate was just left stranded watching him fall down to his own misery. This time he need not succumb, because he knows that there's not going to be another day, another chance. Because once we were starting off with the ISL, few or else for them, and we always had this saying, right? There's always a tomorrow. There's also a chance where they can make a comeback. Now we are at that impasse where one loss and it's done and dusted for Odisha FC. So under tremendous pressure, he has to secure that win. And even if he gets those wins in those 2 matches remaining for Odisha FC, you still cannot say for a fact that they will make it. So that is where you would kind of feel a little bad about OFC, because the Juggernauts, they kind of stepped up, but it was pretty late. And against the likes of Kerala Blasters FC and against Shubham, who has slain greats like CJ this time in this campaign, it's going to be so difficult. Yeah. But सीजे के खिलाफ जिस तरीके से परफॉर्मेंस था शुभम का, उसके बाद से सब लोगों को लगा था कि या मे बी इस बार केरला ब्लास्टर ऐसी कमबैक हो जाएगा. लेकिन वैसा सपोर्ट इधर लोकमान्य की तरफ से नहीं मिला था. बीच में जो जिसमें मिला उन्होंने उस पर कैपिटुलेशन दिखाया. लेकिन ये गेम
बहुत ज़रूरी है और इस पे कोई सेकंड डाउट भी नहीं है, लाइक कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनको जीतना ही होगा अगर उनका थोड़ा भी होप बना के रखना है इस पूरे टूर्नामेंट से। देखिए इधर ओडिशा एफसी एटनेट्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से इधर पासिंग कर रहे थे, बट फाइनली जब उनको पता चला कि अभी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफेंस लो ब्लॉक पे जा चुका है तो उसको खोलना होगा, तो इसी वजह से एक बैक पास टुवर्ड्स फर्नांडिस सार एंड फिर से एक बार स्टार्टिंग से बिल्ड करते हुए दिखेंगे। Yeah, and at this point, both these players are kind of taking their sweet time into the build-up. No one's getting reckless. No one's taking those risks yet. But there you go, a good shot taken in, but wasn't green timed. Saved by the keeper. Goes out for a corner with Lionel Messi. Goes for a back pass, and Mbappe just comes in time. It's again stolen away. Right, Nate? We have to see. And again, another thing for the viewers. I was getting onto is this is Shubham playing against his former club, the Juggernaut. So a little bit of an emotional matchup, but no time for remorse over here as he's created a beautiful chance. But Maldini, oh, beautiful save, but the threat still looming. But now, Nate, you need to calm down. Go for a back pass. It's fine. It's fine. Just settle down because. All that Shubham was doing was just saving up on that potential energy. The Viper just coiling up and had his chance to strike. But seems like Odisha FC have a really strong armor. The Fangs not penetrating through. But this time again another chance, another go at things. But an offside to his dismay. Yeah. 35 मिनट्स ऑलरेडी हो चुका है क्लॉक के ऊपर और अभी भी किसी भी क्लब की तरफ से गोल नहीं दागा गया है और इससे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा क्लोज चल रही है गेम। कभी ओडिशा एफसी तो कभी केरला ब्लास्टर एफसी एक दूसरे के गोल पे नॉक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गोल का जो दरवाजा है वो खुला नहीं है। देखिए एक बार फिर से मौका था, लेकिन बेहतरीन एक डिफेंडिंग का प्रदर्शन। इस बार के लिए बॉल निकल चुका है बेहतरीन तरीके से, ये ऑफसाइड भी नहीं है, लेकिन ओके, सो बॉल कंट्रोल अभी भी मौजूद। बट थियो हर्नांडेज एक छोटा सा गलती, रोनाल्डिनो के पास बॉल बेलिंगम के साथ फिनिश करने की कोशिश था जो हुआ नहीं। You could see the spectators, I'm pretty sure, must be biting their nails with what's happening over here. And Shubham really exploiting with those lob throughs, right? Towards that right wing. Trying to create that attack. Did not have enough men, but could be a sucker punch if Nate goes on to score this one. With R9 just dribbling past the defenders, but one too many over there. And as a result of which, the attack still goes on. Still finding those crevices, still finding those nooks and crannies, and takes his shot finally. But Van der Sar's reach is there. As a result, almost at the end of the first half, and nothing separating these two clubs. Could be the final attack with that short corner being taken. Ashraf Hakimi trying to pass on, but Maldini puts his legs out, and there you go. The first half whistle gets blown, and boy oh boy, we're in for a thriller. We know we've got a match that we're going to remember for a long time. Both these players absolutely relentless, where Nate has been having majority of the possession, but the Viper, given the chance, given the opportunity, he's been going on those very deadly counterattacks. But the only thing missing there is he's not having enough men along with him, right? He gets one player way ahead, and while he tries to enter inside the box, there's nobody left to pass on to. And in doing so, I think the defense of Nate just comes into place. As a result, has been kept at bay, hasn't managed to score yet. Yeah. फर्स्ट हाफ खत्म होने तक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों ही तरफ से बहुत सारे ट्राई किए गए थे। केरला ब्लास्टर ऐसी 3 शॉट में से सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट रख पाए, जिधर 4 में से 2 शॉट ऑन टारगेट रखे ओडिशा एफसी ने। तो दोनों के ही जो शॉट एक्यूरेसी है वो उतना कुछ खास था नहीं, बट डिफेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे, क्या ही कर सकते हैं। दूर से शॉट टेम करने की जरूरत पड़ गया और
जिसकी वजह से अगर ये स्टैट देखने के लिए मिला है। बट देखिए, अगर इस गेम से कुछ भी डिसाइड नहीं होता है, देन जाके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये पूरा मैचअप। बट वाग्या के ऊपर क्या कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस तरीके से वाग्या खेल रहे हैं अभी के कुछ दिनों में, वाग्या थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। सो कहीं न कहीं कोशिश इधर यही करना होगा केरला ब्लास्टर एफसी को कि कम से कम वो ये गेम जीते और उसके बाद नेक्स्ट को-ऑप के ऊपर भी जीतने की कोशिश करे। क्योंकि देखिए, बहुत कुछ मोमेंटम के ऊपर भी डिपेंड करता है और मोमेंटम अभी के लिए तो हो सकता है कि विनिंग मोमेंटम नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे करके ओडिशा एफसी काफ़ी सही पोज़ीशन पे पहुँच चुके हैं, हम लोग कह सकते हैं। तो उधर से लग रहा है कि इनके पास चांस रहे। उसी के बीच में बॉल छीनेंगे केरला ब्लास्टर एफसी से ओडिशा एफसी और इसी इंटरसेप्शन के थ्रू बॉल कंट्रोल उनके पास राइट हैंड साइड पे हकीमी। एम्बापे के रन देखने के लिए मिला था। फाइनली एम्बापे टुवर्ड्स ज़िनेडिन ज़िडान, गुडुलित, बेहतरीन पासिंग, एक मौका बनाते हुए देखिए Oh, बेहतरीन ड्रिबलिंग और बट कवर था। 5 डिफेंडर के साथ खेल रहे हैं, सो टेंशन। yes. Now this is always going to be opposing threat for Nate. He has to create something spectacular. He has to find an opening. And he's been doing so, right? He's been playing a lot box to box. He's been going for those short passes. But when you've got 5 defenders against you right from the very beginning. So one thing set for KBFC is that they're going to be playing heavily on those counter attacks. And Shubham has been trying to create so many of those chances. And now could be another one of them with Mbappe. Pass on towards R9, but lost the ball, but will again retain it back. Needs some passing options. Yes, just dribbles pass. Does he get through with the pass? Yes, he does. Towards Ashraf Hakimi. You could see Odisha FC fighting and scrapping, crawling, scratching their way for the ball. And they managed to get it. But what can they produce? They need to start using their wings a little bit. Start triggering the runs and do something that even Shubham has been doing with them, with Lionel Messi. Now a chance was in the making, but the defense is looking so tight. For KBFC, it's always kind of forcing Nate to kind of rethink his decision. Goes a little long this time with a cross intended, but no, has been volleyed. With that, now this is a beautiful one. Rude Hillet has gone for the breakthrough, has to score, goes for a back pass, but the same problem haunting Shubham. Does not have enough men with him. यस, शुभम बार-बार कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो फिनिश नहीं हो पा रहा एंड सेम विथ इट नेट्स एज़ वेल। इट्स व्यू, वो गैप नहीं मिल रहा। जब 5 डिफेंडर्स रहते हैं उस टाइम पे वो गैप ढूँढ के निकालना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है और उसी की कोशिश किया जा रहा है। एक एक्स्ट्रा प्लेयर को पुश करा सकते हैं बाय द वे अटैक पे विथ फुल बैक्स, लेकिन इधर थियो हर्नांडेस थोड़ा डाउन खेल रहे हैं। राइट हैंड साइड से हकीमी देखने के लिए मिले थे ओवरलैप करते हुए, शायद इसी वजह से इधर थियो हर्नांडेस को नीचे खिलाया जा रहा है। पर देखिए इधर मौका बन रहा था, माल्डिनी काफ़ी अच्छा कंट्रोल और इस बार के लिए जो खतरा है वो तो टल चुका है। It's almost 75 minutes into the game and hasn't felt like it. Has been so end-to-end, TT. Both these players not wanting to give up. Somewhere somebody has to make a mistake. Both their defenses have been quite solid. Both on their toes. Now for Nate, come on, you've got to score a heel to heel. Passing it on towards Mbappe. And Theo Hernandez for the rescue once again. But Hakimi steals the ball. Nate applying immense pressure there. But still needs to find that pass. But instead goes for an outside footer shot. And there you go. The game crashing at such a crucial position. And we're back on the test. So, I think similar sort of plays were being made by both these clubs, both trying to make that routine work, but were kind of unable. Where we could see where Nate was trying to constantly just press in, try to just shuffle the ball across the players,
but the defense was so tight for KBFC that he's not finding a way through. But on the other hand, you could see so many of those driven lob throughs being made, so many of those chances being created. But instantly, Nate manages to kind of force his players back, and there's no passing option for Shubham, as a result of which he has also been unable to score. या एंड आई थिंक इधर इटनेट्स की तरफ से फिर भी ज़्यादा चैलेंजिंग कहीं ना कहीं अटैक्स देखने के लिए मिले. अगर दोनों के अटैक्स को साइड बाय साइड रखा जाए तो इटनेट्स के कुछ कुछ अटैक्स ऐसे थे जो कि गोल हो सकते थे. जैसे कि लास्ट रिवेला जो हम लोगों को देखने के लिए मिला, वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि गोल पे चला जाता है. तो इस बार सेव काफ़ी अच्छा था. तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दोनों ही तरफ से गोल्स आया नहीं है. दोनों ही कोशिश करे जा रहे हैं लगातार, बट वो गोल आ नहीं रहा क्योंकि दोनों का डिफेंस आज के दिन पे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रहा है. डिफेंस के मामले में कोई भी गलती नहीं कर रहे और ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है ये दोनों ही क्लब्स के लिए कि इनके डिफेंस पे गलती नहीं हो रहा. तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात, क्योंकि एंड जाते जाते कोई ना कोई एक मैच तो जीतेगा या फिर ड्रॉ हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ये ड्रॉ होगा. कोई ना कोई एक जीत के लेके जाने वाले इस पूरे मैचअप को. जो जीत के लेके जाएंगे उनके पास वो मौका रहेगा, वो मोमेंटम भी बनेगा और उनके लिए एक अच्छा चीज़ भी रहेगा कि उनका डिफेंस भी स्ट्रांग हो रहा है. क्योंकि दोनों का ही डिफेंस आज के इस पर्टिकुलर गेम के ऊपर तो काफ़ी अच्छा था. स्ट्रक्चर टूट नहीं रहा. जब आप 5 डिफेंडर के साथ खेलते हो कभी कभार आपके जो फुल बैक्स है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन शुभम के लिए वो एकदम सेम लाइन पे खड़े हुए, एक बार के लिए भी नहीं छोड़ रहे. जब वो वर्जिल वैन डाइक के साथ आगे एडवांस कर रही है बॉल निकालने के लिए, अगर वैन डाइक को इधर बीट भी कर दिया जाता है तो उसके पीछे मार्टिन ही खड़ा हुआ है, तो बोल रहे यो ब्रो मैं संभाल लूँ. तो कुछ उस तरीके से जो है वो इधर डिफेंस दिख रहा है. तो आई डोंट नो लाइक कोई भी गोल आएगा कि नहीं मैच खत्म, ये गेम खत्म हो तो. I mean, at this point, you were right. We did see, I think, at a point, Nate realized that this approach is kind of not working out for him. So he kind of wanted to go for those long shots, right? He was trying to get those crosses through. We saw him try at Trivela, and this kind of just pokes me into thinking: is it kind of too late to try that? Because had he done that around that 60th minute marker, would have been much better. Then you would have 2-3 more chances, because we are not seeing Shubham just instantly charge in for the back, right? He's giving him that space, he's giving him that respect there. So if he could try to do something like what Imad has been doing, we want to see a few variations. None of these players have gone for those power shots. There are a lot of things that they could try and execute, whereas even for Shubham, right, he could just try and take a run from the player and maybe just have a go at it, right? Take a shot. What could possibly go wrong? Like 3 or 4 times he's broken free, and we've seen the same outcome. It's kind of we're kind of in a loop where we are seeing the same thing happen over and over again. We're not seeing enough of those midfield battles, because considering how their two formations are set out, they're going end to end. That's for certain. But moving on ahead from here with just mere 15 minutes into the game, somebody needs to score that winner, because the deadlock has not been broken. We are at such an impasse where it's so difficult to say who gets out. Two of these teams so relentless, and this is where you could see that hunger. When you want to stay in this tournament, where you want to qualify for the playoffs, but unfortunately, only one or maybe none of them makes it to the playoffs because of how they've performed in the past. So it's kind of in the very late phase of this tournament where both these clubs are stepping up, and at this moment, at least for Kerala Blasters FC, I kind of find a fine margin where that sliver there, where they could just get through, thread themselves into the playoffs just somehow magically. So if that happens, that could be a different case altogether. But I'm pretty sure we're gonna have the result in front of us, and let's take a look at if we found a winner at all. And it seems like nothing separating these two clubs, at least these two players in this first matchup. Even Stevens, it was a goalless draw. या एंड एज एक्सपेक्टेड, कहने की देखिए मैच चालू होने से पहले लग रहा था कि शायद इधर कुछ रिजल्ट आ जाए इस पहले गेम के, लेकिन जब 70 मिनट्स के आसपास पहुंच गए हम
तब उसके बाद पता चल चुका था कि दोनों का डिफेंस जो है वो आज हद से ज़्यादा बेटर है। तो उनको उस डिफेंस को तोड़ पाना एक दूसरे के अंदर ही सबसे ज़्यादा टफ हो जा रहा था, तो वो हो नहीं पाया। तो अभी आता है पॉइंट को-ऑप गेम के ऊपर, और को-ऑप गेम मुझे लगता है कि केरला ब्लास्टर्स एफसी के लिए मस्ट विन मैच है, मस्ट विन गेम है को-ऑप, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। And both the clubs have won their past co-op game against Hyderabad FC. So this is where the discussion really comes up. Who's better between the two, right? And we've seen Nate and Vagya finding that form. Initially, they were kind of struggling. Same goes with Kerala Blasters FC because वो एक कहावत है ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकते. You've got two very good individual players who've been having a run of bad form, especially with Lokman, but still a veteran, still quite experienced player. And sometimes maybe you would have difference in opinions. And in the start, that was kind of evident with their co-op matches. We were not seeing them in sync. Nothing was going right for them. Up until lately, where they've kind of finally found a common ground to play, and they're starting to deliver. The synergy has been built up, and so has been the format of this tournament, because these two players never have teamed up with each other, and suddenly they're put in where you just have a month, and so you have to work out, and it's so difficult to sort of bring that teammate gelling up so soon. Some clubs have done that, lots to them. Some have failed to do so. So as a result of which, they're lying at the bottom of the table. So and even Duggal, if you remember, TT did mention about that. If you have a good co-op matchup, then you're going to be in strong condition. And you look at the top four clubs right now, everybody has a good, strong co-op game. So this is where I think this is one of the most important matches for both these clubs. They have to win the co-op. This cannot end as a या स्पेशली इस पूरे इंटायर मैचअप के ऊपर तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है। एक है फिनिशिंग ओडिशा एफसी के, दूसरा है केरल ब्लास्टर एफसी के पासिंग, और तीसरा है लक। ये तीन चीज कहीं ना कहीं ऑन पॉइंट रहना दोनों ही क्लब्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें फिनिशिंग की, ओडिशा एफसी की तरफ से वो फिनिश होता नहीं है। वो पहले जितना भी कुछ कर ले, वो आखिरी में जाके फिनिश नहीं कर पाते। ये उनका एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये एक प्रॉब्लम है उनका, जो कि उनका फिनिशिंग पे जाके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है अटैकिंग थर्ड पे। ऑन द अदर हैंड केरला ब्लास्टर एफसी मिडफील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा बॉल लूज करते हैं, जिसके वजह से उधर से काउंटर बन जाता है। तो ये दोनों चीज अगर फिक्स कर लेंगे और उसके साथ लक जिसके साथ रहेगा, वो ऑब्वियसली इस गेम को जो है वो जीत के लेके जाएंगे। लक के बारे में हम लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कभार किसी का वेंडेसर बैटमैन सुपरमैन बन जाता है, और कभी कभार किसी का वेंडेसर मैं बन जाता हूँ, कोई भी बॉल नहीं पकड़ पाते हो। and this is it, right? This is where where it has sort of boiled down to that luck. Both these clubs are going to open their Pandora's box. A lot of things are going to come out, and with that, you would also expect hope over here, and a hope to find a new tomorrow, a chance to stay in this league so far, get into the playoffs, and for Odisha FC, the chances are quite bleak, to be honest, not gonna lie. But for Kerala Blasters FC, yes, there could be a possibility. There could be a possibility. Of course, they would need that tad bit of luck with them, and they would be hoping that they get away with this one, because both these clubs have certainly improvised on their co-op game. And like you said, they have to play flawless FIFA. And the first game was so tight, we did not find any victors, but hoping for a decisive winner in the second matchup as we head in. Odisha FC from left to right in their black jerseys as juggernauts have to do it, and right off the bat, look at that go. This is Bhagya. This is Bhagya's play being made over here, but no, did not work out because Kerala Blasters FC seem to have done their homework. केरला ब्लास्टर्स एफसी बड़ा आज वाकया कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव मोड पे दिख रहे हैं। उनका टैकल भी बहुत स्पीड से आ रहे हैं, जबरदस्त तेजी से आ रहा है। एक गलत पास, रोडोली के पास बॉल था है और हकीमी के पास आएगा। ऐसी बहुत जरूरी है इधर मिडफील्ड कंट्रोल अपने पास रखना उनके लिए। एल्डिनियो, बेलिंगम,
रोडली बट गैप बन गया था बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड पे कैप्टेविया एंड इसी के साथ सर्जिनियो के बीच में। दैट्स व्हाई इधर पासिंग ऑप्शंस खत्म हो गए। बट बहुत जल्दी ट्रांजिशन पे इधर जाते हुए दिख रहे हैं भाग्य एंड इट नीड्स एंड ओडिशा एफसी। ये हम लोगों को दिखेगा काउंटर पे खेलने की कोशिश करेंगे। दोनों मिलके प्रेशर क्रिएट किए थे वैंडेसार के ऊपर बट बीच से पास निकालने में सेफली अभी के लिए तो कामयाब रहे हैं। So far, pretty tight, right? Odisha FC wanting to just break the deadlock just when everybody's trying to settle down. I think they did that yesterday also against Hyderabad FC, and Vakia sort of did that in his own individual game also. So I could just look at that play and say it's Vakia written all over it. But Kerala Blasters FC trying to capitalize the right wing with Ronaldinho have got a good chance, looking to pass it on towards R9. Oh, had that pass gotten towards Jairzinho, you could have seen that first goal. But a lot of intent, a lot of aggression you could see in this KBFC. A step over, but Maldini, strong as a wall, does not let it pass. Yes. Oh, as of now, Kerala Blasters FC उनके तरफ से तो कोशिश चल रहा है कि वो थोड़ा विंग से खेले, विंग को एक्सप्लॉइट करे। ऑन द अदर हैंड हम लोगों को ओडिशा से ज़्यादातर देखने के लिए मिला एकदम सेंट्रली अटैक करते हुए। ये रोल दोनों का कब एक्सचेंज होगा तब देखेंगे किस तरीके से इधर सिचुएशन बनता है। बट एज ऑफ नाउ बेलिंगम टू रोडलीद से रोनाल्डिनियो मौका बन सकता है। बीच से निकल भी गए थे लेकिन बॉडी पुश के चलते रोनाल्डिनियो आउट ऑफ कंट्रोल गया जिसकी वजह से गोल नहीं हुआ। नहीं तो कंट्रोल में रहते तो फॉर श्योर ये एक गोल आ सकता था। So Kerala Blasters FC have been quite attacking so far. They've been creating a lot of chances. They've been utilizing the wings, even playing a little box to box. Also, they've been looking for every single passing lane, and so far they have been controlling the tempo. Right, Odisha FC, they just need to slow it down a little bit. Let the let breathe. Just take a moment. And yes, this is what I want. Just settle down. Let your players get into their formations and then start building up your play. Because you could see, right? Kerala Blasters FC are showing intent, and in doing that, they've lost control. Oh my God, is that a pen? Oh no, oh no. This is not what they expected. And Odisha FC, they go for a shot, take it, and they secure their first goal. And Kerala Blasters FC just left scratching their heads. How could they let this happen? How could they make a mistake like that? And TT, you were talking about luck. Seems like today Odisha FC are gonna embrace it. Yes. With that 1-0 का स्कोर लाइन इधर बन चुका है 25 मिनट के बाद ही और प्रेशर पूरा शिफ्ट हो चुका है लोकमेनु एंड शुभम के ऊपर क्योंकि जो पिछला गेम था वो ड्रॉ के साथ खत्म हुआ था। दैट मीन्स ये गेम पे जो भी जीतेंगे उनके पास एक ह्यूज लीड आ जाएगा जिसके तरफ इधर बढ़ते हुए दिख रहे हैं ओडिशा से। बेलिंगम टुवर्ड्स वर्जिल वैन डाइक बट केरला ब्लास्टर्स उनको थोड़ा अभी सेंट्रल लाइन से अटैक बनाने की कोशिश करना होगा। बट विद जॉर्जिनियो फिर से एक बार आउट ऑफ कंट्रोल गए एंड आज बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बॉल को। कभी कभार चाहे एक्स्ट्रा पास हो जा रहा है या फिर बैकलाइन के बाहर थ्रो लाइन के बाहर बॉल चला जा रहा है। पोजीशनिंग देखिए 64% बॉल पोजीशन रखने के बावजूद भी इधर गोल आया ओडिशा एफसी की तरफ से, वो भी एक पेनल्टी पे। तो कहने की ओडिशा एफसी खुश तो बहुत होंगे। Do you see Lokmanyu's cam? Tell me something that's out of place. TT? Yep. Do you see something odd with Lokmanyu's cam there? Oh, yeah, finally. It's Genesis House, right? Yes. The brothers have united. And I think Tuchel also said sharing very close ties and with
of course, love to visit each other's place, decide to stay over, Mumbai or Delhi, does not matter. And yeah, you could also have that little bit of the tactics coming in. But right now, Kerala Blasters FC, got a feel for them. Been looking so attacking, so threatening. But that one little mistake, and they are trailing by that one goal. And Odisha FC, they're going to take their sweet time. Every single time they get the possession. They kind of are going up for the build-up. In that last goal where it went down to a pen, you could see, right? One little mistake where they kind of brought one defender, just went charging in, and he lost his marker. And then it was a last-ditch attempt, because had he not gone for the tackle there, then the chances of a goal being scored would have been immense. And to their utter disappointment, it kind of turned out to be a pen. And it's like a circle of life. If you remember the first game where Vagya conceded a pen and a red card, from there onwards, going on to scoring a pen. Odisha FC have definitely come a long way in this league, and in these dying moments in their final matches, they're starting to score. Nice passing routine going on between the players, but Kerala Blasters FC seem to have stolen the ball away, but not enough time remaining as we reach the end of the first half. And there you go. So Odisha FC, courtesy to that one penalty, have managed to go one up. And Kerala Blasters FC, I think in the second quarter, they kind of were dominated by Odisha FC, because they've recovered quite a lot of possession there. या क्योंकि कुछ देर पहले तक 64% पोजीशन था केरला ब्लास्टर एफसी के पास एंड ओनली 36% था ओडिशा एफसी के पास, लेकिन उस जगह से 44 एंड 56 बहुत शानदार तरीके से कमबैक देखने के लिए मिल रहा है. बट आई थिंक ओडिशा एफसी जो गोल उनको मिला है उसके बाद भी उनको कोशिश करते रहना चाहिए, बट केरला ब्लास्टर एफसी अभी तक उनको एक सिंगल शॉट लेने का मौका नहीं मिला है. एंड आई थिंक ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आप पूरा 45 मिनट्स खेल चुके हैं एंड उसके बाद भी आपको एक सिंगल मौका नहीं मिला है शॉट लेने का गोल के ऊपर. टारगेट पे रहे ना रहे वो तो अलग बात है, लेकिन आपका एक भी शॉट नहीं है. ये इससे पता चल रहा है कि डिफेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए ओडिशा एफसी की तरफ से. हकीमी एज ऑफ नाउ टुवर्ड्स बेलिंगम, और हकीमी यही वो प्लेयर है जिनके वजह से वो पेनल्टी मिला था और जो डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ था. बट सेकेंड हाफ आई थिंक केरला ब्लास्टर एफसी कुछ अलग सोच के साथ आएंगे, कुछ अलग स्ट्रेटजीज के साथ. यूसुबियो एकदम बैक लाइन के ऊपर रोल करते हुए लेके आए बॉल को, बहुत ज़्यादा क्लोज था हालांकि. देखिए इस बार मौका है और फिनिश भी हो चुका है. राइट टॉप कॉर्नर विद रोनाल्डो एंड अभी हो चुका है इक्वलाइज. सब अभी सेम पेज पे. Yes, this is more like it. Especially that sheer calmness with Eusebio, where we felt like it would have gone out for a goal kick. But no, they kept the ball in, went for a cutback, few passes again. And then with R9, just a switch and a turn and a shot. Beautifully executed. Now this is where you could see the teamwork coming into play for Kerala Blasters FC and Odisha FC getting haunted right now. At this moment, all right, a very loose pass but well collected by Lionel Messi on towards Hakimi. But Kerala Blasters FC just wanted to instantly avert the threat. Out it goes for a throw. They're kind of trying to contest for it, doodle it. A little bit of those passing options is not yet challenged by the defenders of KBFC. Again, Odisha FC taking the sweet time with R9, a step over, getting in close, looks for that cutback on towards Eusebio, but the numbers just overwhelming them. And as a result, Odisha FC has to retreat, give a few back passes, and again start building up their attack from scratch. Yeah. फिर से ओ एक गलती हो गया था. देखिए ये सब जगह पे आप कर देते हो टैकल, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप टैकल के साथ वही सेम मोशन के साथ आपका बॉल भी चला जाता है गोल के अंदर. तो कुछ इस तरीके का ट्राई किया गया था कि स्लाइड गिर के अगर बॉल को गोल के अंदर दागा जा सके,
लेकिन वो इस बार के लिए तो नहीं होगा। बट ओडिशा एफसी जो पूरे हाफ तक एंड अभी पूरा एक एडवांटेज लेके बैठे थे, वो एडवांटेज अभी जा चुका है, तो उनके लिए भी अचानक से पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, जिसका फायदा उठा सकते हैं केरला ब्लास्टर्स एफसी। डिफेंस अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से इधर मेंटेन करते हुए माल्डिनी टुवर्ड्स रोडलीत एंड इन जिडान, और देखिए इधर थोड़ा स्लो डाउन करके होल्ड करके खेलने की जरूरत है, क्योंकि ओडिशा एफसी अगर गलती करेंगे देन कैपिटलाइज कर सकते हैं इधर केरला ब्लास्टर्स एफसी। मौका, बेहतरीन पास, तो नहीं देना था ये सेकंड पास। आई थिंक रोनाल्डो के साथ शॉट ले सकते थे वो जिस जगह पे थे। Yeah, I mean, he could have done, but then it's just coulda, shouldas. Little bit हाँ, of that synergy missing. Maybe just had thought it out and was in the wrong position. As a result of which, did not go the way it was intended. 70 minutes already into the game, and still nothing quite decisive from either of these clubs yet. Still in pursuit for that winner who gets to score one. A driven pass towards R9 with Eusebio, a little bit of a room on that left wing, but decides to play it around the center only. As a result of which the ball has been stolen away. Eusebio just dribbling past has found did find R9 on those wings, but lost touch. So at a very crucial moment, we've seen the pause has been queued. Now this is where both these clubs make the necessary changes that will sort of decide who walks away with a victory. Because to be honest, really, I do not want to end. I do not want this match to end at a draw. आई थिंक मुझे भी नहीं देखना है कि ये एक ड्रॉ के साथ खत्म हो। अगर ये भी ड्रॉ के साथ खत्म होगा देन एक बार फिर से सिमिलर सिचुएशन आ जाएगा, जैसे कि हम लोग को पिछले पे देखने के लिए मिला था वो सीडीएफसी एंड बेंगलुरु एफसी के बीच में, कि आखिरी गेम पे जाके सब कुछ डिसाइड होने वाला था, और शायद इधर भी वैसा ही कुछ होता हुआ दिख जाए, क्योंकि अभी तक तो बहुत बहुत ही ज्यादा क्लोज चल रहा है सारे के सारे पूरा पूरा सिचुएशन। आखिरी 20 मिनट इस कोऑप गेम के बचे हुए कैंटोना को लेके आ जाएगा। तो यस, फाइनली धीरे धीरे करके कैंटोना का यूज देखने के लिए मिल रहा है। बीच में से कोशिश है कि वो एक पास निकाले कैंटोना टुवर्ड्स हकीमी। एम्बापे भी इधर मौजूद है, ज़िडान उनके पास ही थे पासिंग के लिए। कैंटोना बहुत शानदार एक बॉल, लेकिन इस बार मिस नहीं करेंगे। रोनाल्डो तक पास पहुंचा, रोनाल्डो गोल स्कोर किए एंड ओडिशा एफसी 2-1 There you could see. से कम बैक करना। I'm so sorry to cut you off there, but the happiness on Vagia's face shows it all. Yes. भाग्या बहुत ज्यादा खुश थे, एंड आई थिंक वो इधर बहुत सोच समझ के किए थे, यही दिखाना चाह रहे थे उनके कैंप पे कि यस मैं तो पहले से ही सोच रहा था ऐसा। एंड बहुत ज्यादा बेहतरीन इधर ये गोल था, और इसी के साथ आई थिंक कमबैक करना इधर से बहुत टफ हो जाएगा फिक्सेस। Yeah, because this sort of changes everything for Kerala Blasters FC. Because with that mindset that they had come in, they wanted to score a goal, and suddenly they have conceded. Where do they go from here? No other chance but go ultra attacking. And Odisha FC, the moment they came with that change, got Cantona in, that beautiful cutback, and the way R9 just went past the keeper there, received it at the right moment. And we've seen, with this new R9 card, players are just turning and taking a shot, and it just goes in. And somebody has taught them, as everybody, the same thing, and everybody is doing that, and every single touch is gold. And there you go, another goal, and a very crucial one in such an important moment, but we are back. Yeah. The curse continues as we are demented, but hoping so that this match gets to a conclusion where it should be decisive, right? And now let's take a look at what's on the line over here. If Odisha FC continue with the scoreline, if they win the game from here, then they've secured that 1 point. So that is there. Nobody can take that away from them.
But for Kerala Blasters FC, it is going to be a huge, huge sucker punch because, like we said, they cannot just settle with one. They have to get those three, and for that to happen, they have to score an equalizer at the very least. At the very least, to take this game to the third matchup, a matchup where we could see we would see Lokmanu and Bhagya go up against each other, which would be the decider. So a lot on the line. Kerala Blasters FC have to score anyhow, because if Odisha FC even if they win this game, I mean, I have to take a quick look at the scorecard. So they'll get 8 points. Now they'll make it to the 9th position, but they would have played 9 games. And Hyderabad FC have just played 8, and they're at the 7th. So to get to where ATK Mohan Bagan are is kind of very difficult, because ATK Mohan Bagan have merely played 7 games, and they're at the 6th spot with 9 points. And for Kerala Blasters FC, considering they've got a game on hand, if they win this game also, they'll get tied with Hyderabad FC. And from there onwards, if they win remainder of the 2 games and Chennai FC and ATK Mohan Bagan lose all 3 of their next games, then only we can say that these clubs have a chance of making it to the playoffs. So, which is very difficult, to be honest, and has become even more, especially with Odisha FC scoring that goal. So TT, नाखून चबाने पड़ रहे हैं, but मेरा दिमाग सिर्फ वही tangent में अटका हुआ है कि क्या चल रहा है उस मैच के अंदर. मेरा भी मैं भी इधर यही सोच रहा हूँ कि क्या उधर से गोल भी आ सकता है, क्योंकि देखिए ओडिशा एफसी के इस तरीके के डिफेंस थे, इस हिसाब से जो एक गोल आया था वो बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करने के बाद निकल के आया. तो अभी एक और गोल स्कोर करना उनके लिए टफ तो है, लेकिन वो होता है ना कि आपका एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस आपका पूरा स्कोर लाइन चेंज करके रख सकता है. तो क्या वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोकमेनू हो सकता है कि उनका फॉर्म उतना खास चला नहीं है, हम लोग उनको लेके बहुत बार डिस्कशन किया, लेकिन वही वो प्लेयर है जो कि एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बहुत सालों का वो भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं. एंड इतने सालों के एक्सपीरियंस में कभी कभार तो हुआ ही होगा कि वो कम बैक किए हैं, एंड सिर्फ कभी कभार नहीं, बहुत बार हुआ होगा कि उन्होंने कम बैक किया है. तो वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है वो इधर काम लग सकता है. और ऑन द अदर हैंड ओडिशा एफसी की अगर बात किया जाए, उनको अगर आप प्रेशर में रख सकते हो, प्रेशर उनके ऊपर शिफ्ट कर देते हो, देन वो भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे आ जाते हैं. तो मे बी लेट्स सी, लाइक ये तो रिजल्ट ही बताएगा क्या होगा. Fingers crossed is all we can do right now. Production is just making us wait, to give that final scoreline, what goes on, because Kerala Blasters FC, if this comes out as a draw, they better start packing their bags, go out for a trip. I mean, Lukman is already out already, and might as well just take a little bit of a breather. And yeah, like you said, you're correct. Lukman is one of the most experienced players. He's been a veteran, but lately we haven't seen all that experience being turned into positive results, right? And this has been a cause of concern. And I have had a personal chat. He's going through that. Every athlete, I think, in one of those phases, they go through a run of bad form, right? So this is one of those phases which I think you have to embrace, and you have to just struggle through it, keep working hard, and that's where you kind of get separated from the rest, right? You cannot be brittle. You have to have a very confident mentality. And Lokmanu is one of the older players also. Now with so many young talents on the rise, and whenever it's the young talents, the topic of evolution comes in. Because when you're younger, let's be honest, this is a proven fact. You've got that hunger, you've got that agility, you've got those risk-making moves, right? You kind of have that intent where you kind of do not second think yourself, you just go for it. And when you kind of you start aging, right? When you're 26, 27, getting into that phase, you start off playing it a little safe. You kind of start, playing a lot technical. And in doing that, sometimes, somebody just edges past you. And that has kind of been the cause of concern. But hold on, enough life and philosophy there, as we have the results in front of you guys. Let's take a quick look if this ended in an Odisha FC's victory. But what? Hold on. Shivam and Lokmanu, they turned the tides.
They've scored a winner also. I hope, Lokmanya or Shubham, you've captured it, you've recorded it. I want to see that. We all want to see that. TT, देखिए इसी के लिए मुझे मन Yeah. करता है कभी कभी कोसने के लिए अपने आप को कि क्यों कट जाता है, ऐसा क्यों क्रैश हो जाता है, ये जो थ्रिलर मैचेस हम क्यों मिस कर जाते हैं. Oh, it's changed. All right. Hmm. Drama again. Oh. All right. So Yeah. ये कहने का एक इमोशनल रोलर कोस्टर था हमारे लिए भी, ये कुछ टाइम पीरियड के अंदर कि ऐसे, लेकिन फाइनली या ओडिशा एफसी विथ 2. तो जो हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले फिक्सेस के, लुकमानु एंड वागिया, एंड अभी के लिए तो वागिया के लिए प्रेशर भी हट चुका है क्योंकि वागिया को पता है कि वो इधर लीड पे है, बट सारा का सारा प्रेशर इस पूरे एंटायर मैचअप का आके चढ़ चुका है लुकमानु के ऊपर. और जिधर शायद कोई है जो इस प्रेशर से बाहर निकल सकते हैं तो वो लुकमानु है. वी नो कि कभी कभार एक एथलीट का फॉर्म डाउन चलता है, लेकिन उस फॉर्म से कौन से मैच पे वो बाहर निकल के, लाइक वो डाउनफॉल से कब से वो बाहर निकल के आएंगे, कब उनका फॉर्म वापस आ जाएगा, वो किसी को भी नहीं पता होता. मे बी वो ये मैच हो जाए जिधर वो इधर कम बैक कर दे. और हम लोग देखे जब बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़े बड़े मैचेस पे ही कम बैक करते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेज है जिधर उनको जरूरत है, लाइक उनके क्लब को उनका जरूरत है. आई थिंक वो डिलीवर करना चाहेंगे और इस बार हो सकता है कि वागिया के ऊपर वो इधर डोमिनेट करे. बट या लाइक वागिया का फॉर्म कहीं नहीं कि पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा हो गया है, तो भी देखना होगा क्या रहता है. बट या ये पिछला मैच 2-1 के साथ ओडिशा एफसी बहुत बहुत ज्यादा शानदार था. I was kind of, just putting the maths in, adding the numbers up. So, with this draw, I think the dreams of Kerala Blasters FC have been, in fact, with this win for Odisha FC, and now heading into the final game, even if Lokmanya wins it, sort of ends it as a draw, right? So, they're just gonna get 1 point, and then they will have 2 more games remaining from 6 to. If they win, if they win both these 2 games, then they get to 12 points. With Chennai FC, ATK Mohun Bagan, Hyderabad FC, Odisha FC, all in the race. So kind of looks really impossible, and even the same can be said for Odisha FC. Let's say they get a win out of this one, so they'll go to 8 points, and if they get a win in the final fixture, they go to 11. And is that gonna, even if they make it to 11, it's very doubtful to say because they still have ATK, they've got Hyderabad, and the rest also. So at this point, I don't know if this result is going to change a lot of things, but Odisha FC keeping their hopes alive, still fighting. But like I said, this was such a crucial game for Kerala Blasters FC, and they kind of bottled that one up. Losing over here, I think at the back of the mind, Lokmanya already, I think he's come up with his maths, and he knew that how important that victory was. But regardless, they needed a draw. They could not fetch it, and off we are into the final game, the final showdown between Bhagia and Lokmanya. Odisha FC from left to right, hoping to secure those 3 points. All Bhagia needs to do is either get a win or a draw, and he'll enjoy. He'll have a laughter. He'll smile. But for Kerala Blasters FC, they've got to do anything and everything, because if they lose, then pretty much it's done and dusted. You cannot even hope to be on anybody else's mercy. या एंड विद भाग्या हम लोग को अभी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस गेम देखने के लिए मिलेगा उनके तरफ से, क्योंकि जब जस्ट कोऑप चालू हुआ था उसके पहले जो 2-3 पासेस थे रेड मार्कर के साथ वो भाग्या थे, और उनका वो एग्रेसिव कुछ इंटरसेप्शंस बता दिया था कि वो आज क्या सोच के आए हैं. लेकिन उसी के बीच में इट कैप डेविया लखमेनु बहुत शानदार तरीके से बॉल कंट्रोल भी करते हुए और अपने पास भी रखते हुए. रोनाल्डो डिफेंस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए, लेकिन एक गलती पे मौका बन सकता था, लेकिन सही टाइम पे
वर्जिल वैन डाइक पहुंचे, बट ओडिशा एफसी इधर से उनका तो सिर्फ एक ही टारगेट है अभी के लिए एज ऑफ नाउ, कि जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी एक गोल स्कोर करो और प्रेशर इधर केरला ब्लास्टर्स एफसी के ऊपर और बना दो, क्योंकि लोकमैन वो तो कोशिश करेंगे द गोल करने की, बट वैंडेसा इट वाज टू रिस्की. Yeah, I mean, Lokmanu will do anything and everything to win, and we could see, it's kind of going for a similar replicated style that Shubham got himself into the pitch with in his game against Nate, right? And at this point, he's been going for those driven throughs, but this time has found some room on towards Ronaldinho. Has got to take a shot. Who went for the ball roll, gives a cross, tried to go for a header, but in vain. At that moment, I really would have wanted Lokmanu to go for a shot, maybe just finesse it through. I've seen sometimes that goes in, or maybe a driven shot. That's kind of in the meta, really very difficult to save. What could go wrong, basically? But now could be instantly punished, but thankfully saved. Yeah. 18 minutes game already passed, but अभी भी वो पहला गोल आया नहीं है, एंड आई थिंक उस तरीके से वैसे मौका भी नहीं बने कि कोई गोल स्कोर करे. कोशिश चल रहा है, बट अटैकिंग थर्ड पे जाके दोनों ही फेल होते हुए दिख रहे हैं. वाग्या कोशिश कर रहे हैं कि अभी थोड़ा स्लो डाउन करें, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पेस पे खेल रहे थे, तो उनके तरफ से अभी के लिए तो अप्रोच है कि थोड़ा स्लो डाउन करके खेलें. बट रोनाल्डो कठिन नहीं कर पाए, लेकिन इस बार पास बेहतरीन हो सकता था, हुआ भी, लेकिन जिस तरीके का रन एक्सपेक्ट किए थे इधर लोकमैनु, उस तरीके का रन निकाले नहीं. इधर एम्बापे क्रॉस की कोशिश था, जार्जिनियो पीछे थे, बट डिफ्लेक्शन एम्बेसी के साथ बॉल गया गेम के बाहर. कोशिश यही रहेगा कि वो शॉर्ट पासिंग के थ्रू इस बार प्रॉपर कंट्रोल में रखे और एक शॉट ऑन टारगेट ले, क्योंकि शॉट ऑन टारगेट अगर ये हो जाता है देन वाग्या के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा और गोल भी आ सकता है. लुशियो टुवर्ड्स जार्जिनियो, लेकिन कैप्डेविया चौकन्ने थे एंड एकदम प्रॉपर टाइम पे इधर इंटरसेप्शन देखने के लिए मिला. बट अभी भी देखिए कॉन्स्टेंटली इधर प्रेशर बनाया जा रहा है लोकमैनु की तरफ से, और ये प्रेशर काइंड ऑफ अभी 6 मिनट 7 मिनट हो चुका है, वो बना के रख रही है. ये शायद तीसरा अटैक है सेम लाइन पे, और अटैक का पल भी मिलेगा. आउटकम मिल चुका है लोकमैनु को. Finally gets himself on the scoring boards. It took him some time. It took him some hustle there, but he's gotten through. As you can take a quick look, a 4-3-2-1, very standard ultra-defensive style of play. But for Vagia, he's got to rethink his ways, and such a powerful shot coming in. Just could hear that thump when it hit. A little bit of a respite, but job a little too late also, to be honest, over here for Kerala Blasters FC. A desperate win. A win over here could take them to 6 points, just ahead of Odisha FC. Or rather, in fact, both these, with just one more extra game to be played for Kerala Blasters FC. But with the next two remaining, they'll be hopeful. They win. It's going to be really tough. Some important big fixtures again. A long through stride to be intended. But Bhagya, now he's got to write his story. He's going to do something safe. But is he offside? No, he's onside. With Pele has some room, but Capdevia. Oh. You could see Van der Sar tripping over there. It's fine. It's fine. Lokmanu's managed to grasp the ball again, and off he's with another attack. Yeah. And लोकमानु अभी बहुत ज़्यादा कहने के कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए पहला गोल एक बार आ जाता है ना, फिर उसके बाद आपको लगता है कि या कंट्रोल में आ चुका है, एंड अभी सेकंड गोल के लिए जा रहे हैं. कैप्टेविया लेफ्ट हैंड साइड से बेहतरीन रन निकालते हुए, लेकिन कोई पासिंग ऑप्शन मौजूद नहीं. बट फाइनली देखिए क्या शानदार ये पास टुवर्ड्स बेलिंगम. बेलिंगम से कोशिश था एम्बापे के लिए, बट एम्बापे ओपोनेंट टीम के एम्बापे के पास चला गया. Yeah, and I'm sorry to just cut you off again, but
Really at this point, Manu, Hmm. I think he's getting really into the heads of Wagya. यस या एंड वो चीज दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से लोग मेनू परफॉर्म कर रहे हैं वाग्या कल या फिर उसके पहले दिन इस तरीके से नहीं खेल रहे थे उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिसिंग दिख रहा है अभी जिस तरीके से बैक टू बैक प्रेस किया जा रहा है एंड लोको मेनू का ये गेम हम लोग बहुत दिन से मिस कर रहे थे कि वो प्रेसिंग करेंगे वो हाई प्रेस खेलेंगे और वो हाई प्रेस पे पीछे ढकेल के रख देंगे देखिए इधर लो ब्लॉक किया गया था लेकिन लो ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश पे जा तो रहे थे लेकिन कैप्टेविया सही टाइम पे एक इंटरसेप्शन देखने के लिए One other thing that just struck my mind right now. Lokmanu, usually we've seen in how he started his campaign in the season 2 is he used to score those first goals, but then instantly used to concede one more, and that sort of had been the Achilles heels for him. But this time, after scoring, he's been looking quite stern, quite calm, and he realizes how important this victory and how important that 1 point is going to be. And if this sort of goes to a draw, then Odisha FC, I mean, the chances were pretty much bleak. Then it would just get negligible. They need that desperate W, and for that W, Wagya has to either score an equalizer or go on to win get the winner and win the game and secure those 3 points. So far, the end of the first half, a little dominating by Kerala Blasters FC. Have been creating multiple chances, most of them through those driven lob throughs, but eventually a strike from Chesinho gets the job done. And now, let's see if Odisha FC can stage their comeback in the second half. Can they find the equalizer, folks? लेट्स सी वही अभी के लिए मेन क्वेश्चन है क्या इधर एक इक्वलाइजर आएगा क्योंकि इक्वलाइज अगर कर देते हैं दैट मींस इधर 3 पॉइंट लेके जाएंगे लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं देन एक पॉइंट के साथ ही खुश रहना होगा बट केरला ब्लास्टर्स एफसी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनको जीतना ही है और इधर डिफेंड करना ही है क्योंकि उनको वो 1 पॉइंट चाहिए ही चाहिए तो वही कोशिश चलेगा लोकमान्य अभी के लिए बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं वाग्या से जो कि वाग्या तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको केविन डे ब्रुयना और बीच पे देखिए प्लेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं मिडफील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा आउटकम बैट इस बार जनरल क्रॉस टुवर्ड्स एनेडिन जिडान बट लूशियो मौजूद और बिल्कुल भी नहीं चुके इधर बॉल को शील्ड करने से बट अभी तक खतरा नहीं टला है बॉल कंट्रोल अभी भी ओडिशा एफसी के पास बट ये बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग अटैक था कुछ भी हो सकता था इस अटैक पे Yeah, I think Lokmanu has come prepared for it. This time, maybe not. Oh, Bhagya! How could he get loose there? It had to be a good header, but Lokmanu wanting to punish him. Is he out? Yes, he's offside. So, a chance again for Bhagya to build up that attack. So, Bhagya has been, this has been that go-to play for Bhagya so far. With Pele, little of a step over, looks for that cutback, but this is where that R2, extra R2 comes into play, and we kind of tend to get a little bit unlucky because had he made that cutback and if it had made the right pass, then we were looking at the equalizer, no caps. But I think Lokmanu needs to just calm down a little bit, which he's exactly doing. So Lokmanu knows how to address a certain situation, no matter how dire the circumstances are. He knows how to deal with pressure. That is what experience puts on the table. And now a good chance. Oh, still alive though with R9 towards Rudhulit with Jazinho. He's done it once. Can he do it twice? No. पहले ओडिशा एफसी बहुत ही तेजी से ट्रांजिशन पे जा चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड कैप्टेविया खाली क्या एक लॉन्ग पास आ गया कैप्टेविया फाइनली वाग्या बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग अटैक बनाते हुए बीच से निकल चुके हैं इधर डे ब्रुयना मुझे लगा था शायद एक लॉब पास जाएगा बट एम्बापे के साथ इधर ट्राई किया गया है बट फिर से बॉल जीता गया ओडिशा एफसी प्रेशर बनाते जा रहे हैं इधर केरला ब्लास्टर्स एफसी के ऊपर आखिरी 25 मिनट और ये 25 मिनट एक गोल कम से कम दागना है अगर 3 पॉइंट निकाल के लेके जाना है इधर से और उसी के ही तलाश पे वाग्या पास टुवर्ड्स एम्बापे इंसिडेंट मौजूद तो थे बट बीच से बहुत ही अच्छा एक बॉल इंटरसेप्शन टैकल और
अभी के लिए केरला ब्लास्टर्स एफसी अभी भी अपना जो लीड है वो बना के रखे। Oh yeah, I mean at this point, reaching the third quarter, in fact the end of the third quarter, we get into the fourth, and yeah, Odisha FC have to make those necessary changes. They've got to get some new men up, get Erling Haaland in, and try and get the job done, get that equalizer. All Bhatia needs to do is just that. But Lokmanyu has been relentless with the press that he's been applying. A little bit of a breakthrough with Captain Villa. You can see that run coming in from Zidane, still holding on to the ball. It's going to be Bhatia trying his very best not to get beaten at this moment. Get that possession up. We haven't seen Lokmanyu trying to steal for the ball. Went for a charge in, and this could be really deadly as he takes a shot and Bhatia scores. Beautiful room found with Pele, goes for that step over, and Sue is what he says, and the fans are elated. Much needed equalizer being put up over here as Odisha FC. All they need is that. All they need is that. If things are as it is, then Odisha FC will get those 3 points. But Kerala Blasters FC, now suddenly everything has changed for Lokmanyu. He's the lightning has struck. He needs to be the one who needs to score one more goal to keep their hopes alive in this campaign. Yeah. Oh, अभी जो सिचुएशंस है जो थोड़े बहुत कुछ देर के लिए केरला ब्लास्टर्स के तरफ इधर दिख रहे थे वो एक बार फिर से जा चुका है। ओडिशा एफसी का कमबैक आ चुका है और ओडिशा एफसी अपने 3 पॉइंट्स के लिए अभी लड़ाई करने वाले हैं। जस्ट उनको गोल कंसीड नहीं करना है। वो गोल इधर दाग दे दैट्स ओके, बट कंसीड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर नहीं भी दागेंगे फिर भी उनके लिए चलेगा, लेकिन कंसीड बाय एनी हाउ बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत 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 कोशिश के बाद फाइनली वाग्या को ये गोल मिला है। एंड वाग्या हम जानते हैं कि वो बहुत पेस गेम पसंद करते हैं, बहुत तेजी से खेलना पसंद करते हैं, एंड उसकी वजह से भी कहने की बहुत सारा जगह मिल जाता है, पिच के ऊपर खुल जाता है कुछ कुछ एरियाज जिसको कैपिटलाइज करते हुए देखने के लिए मिले थे लोकमान्यू। बट जब से वाग्या थोड़ा स्लो डाउन किया तब से, और स्पेशली सेकेंड हाफ शुरू होने के बाद से, शॉट देखिए राइट पोस्ट के एकदम राइट हैंड साइड के बाहर से लेफ्ट ऑफ कॉर्नर, व्हाट अ गोल। एंड ये पहले 98 कार्ड के साथ ही पॉसिबल है और वही चीज इधर देखने के लिए मिला। केरला ब्लास्टर्स ऐसी लोकमान्यू, उनको कुछ चेंजेस करने की जरूरत है अगर उनको बहुत तेजी से गोल चाहिए तो। Yeah, and he needs to find that quickly. Does not have a lot of time remaining. Just mere 12 minutes and has no room of error. And with Rude Hullet trying to create that chance, given a pass towards Hakimi. Oh, and this is where Bhatia might end up punishing him. You could see Pele just blazing past, but now he's in an offside position with Erling Haaland. But Lucio makes that crucial intervention there. Still giving a chance to Lokmanyu for fighting there against Bhatia. As now, let's see what happens. Run from that left wing with Theo Hernandez. Goes for a ball roll, now for a cross in and takes a shot. It's green time. Still the ball in play with Ronaldinho. Goes for an elastico, takes a shot. Lokmanyu, what have you just pulled off right now? In the dying minutes of the game, this man never gives up. What was that? Bhatia just left watching. That was one of the most phenomenal goals we've seen at such a crucial moment into the game. Kerala Blasters FC, folks, they're still hanging by the thread, and they are doing so. इधर ब्राजीलियन सांबा के ट्यून पे एक इटालियन एंड एक डैनिश, जो दोनों खेलने के प्लेयर्स को, लाइक डच प्लेयर को इधर नचाया गया। बीच में थे माल्टिनी एंड वैन डाइक। रोनाल्डिनियो के ट्यून्स पे वो नच गए और बीच से बॉल निकाल के लेके चले गए। व्हाट अ गोल।
क्या शानदार परफॉर्मेंस लोकमान्य की तरफ से। एंड आई थिंक इसीलिए हम लोग इतना ज़्यादा बात भी कर रहे थे कि इनके पास वो एक्सपीरियंस है, ये इधर से पुल्ड ऑफ करना है तो वो ही कर सकते हैं। एंड आई थिंक अभी भी या 8 मिनट बाकी है, बट आई डोंट थिंक कि वो 8 मिनट काफ़ी है। Oh God, बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस। this game, I'm telling you, that's why we love FIFA. One goal lead does amount to nothing at all. What happens if Agya scores an equalizer here? We have seen, things being pulled off. We've seen sometimes Kerala Blasters FC also bottling up, 2 goal leads also. But this is where Lokmanu has to exercise extreme caution, extreme patience, need to do whatever required here, making those necessary changes. Kerala Blasters FC will have to defend with all their might. Might as well hog on to the possession, but Bhagya has shown intent where he wants to keep the ball, keep that final attack to him, and wants to convert. या बट अभी देखिए सिर्फ 2 मिनट बाकी। लोकमान्य सिर्फ और सिर्फ अब बॉल रखेंगे अपने पास एंड वही रखते हुए कोई चांस इधर बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे। एंड या वो लाइक लेफ्ट कॉर्नर उनके लिए भी सबसे ज्यादा खुशहाल कॉर्नर है। पीछे वन डाइक, हलैंड, फाइनली इट्स डन। लोकमान्य के चेहरे पे वो खुशी बहुत दिनों के बाद नजर आया। एंड आई थिंक एक देखिए ब्रेक की जरूरत होता है, हर कोई प्लेयर हो उनको एक ब्रेक की जरूरत है। हर सिर्फ प्लेयर ही नहीं, जो कोई भी जगह पे काम करते हो, अगर वो ब्रेक नहीं मिलेगा, वो रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा, देन आप अपना काम जो है वो उस तरीके से नहीं कर सकते। एंड वही चीज़ दिखा जब जैसे कि हम लोग देखे अभी कि इधर चैंडी सेट के घर पे हैं, सो उधर बातचीत हो रहा होगा, दोनों फ्रेंड्स हैं, मिले हैं, एक रिफ्रेशमेंट उनको मिला है, प्लेस चेंज हुआ है और उसका पूरा फ़र्क आता हुआ दिखा है। क्योंकि केरला ब्लास्टर्स स्पेशली लोकमान्य को हम लोग इतना ज़्यादा हाई प्रेसिंग गेम खेलते हुए बहुत कम ही देख पाए हैं इस पूरे सीजन के अंदर, जो कि आज दिखाए उन्होंने वागया खेला। तो ये बहुत अच्छा कहने का आउटकम था। Yeah, and this was our first goal. Just a nice tap in, got up, just thumped it, and then Bhagya scores one. And this was, so beautiful to watch, right? This moment just breaks past the defense, and then what we see from Lokmanya, what he's created is absolute sorcery. That is something that somebody like Lokmanya can do, and he's shown the fans why Kerala Blasters FC has decided to retain him for this season. This one, green time shot. Van der Sar makes the save. Then with Mbappe, with Ronaldinho. Oh, that elastico there, just making sure that it gets converted into a goal and a winner for him. And as this fixture ends, it gets tied. Both Odisha FC and Kerala Blasters FC will be sharing the spoils of war. Both of them taking a point each. And that being said, folks, let's take a look at the scorecard for one last time. And there you go. So the first matchup, we did not find any conclusive answers. And we head on into the second matchup where there was some late last-minute drama. Odisha FC got that 2-1 lead up, and Kerala Blasters FC, their hopes kind of were shattered. But comes in Lokmanya, gets that win for his team, at least secures just that 1 point from this fixture. And the big question is, where do we head off from over here, right? And because now both these clubs are going to be to the mercy of the other clubs. They would just be hoping that the top four, the big four, they just dominate, and then all they've got to do is just move ahead, right? So at this point, let's take a quick look at who the MVP is going to be and find for ourselves what's going to happen. Lokmanya is going to be the one, those 2 goals scored, and that's going to be the decider. Yeah. एंड फाइनली लोकमान्य को इधर देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। लाइक मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने दिन से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो इधर एमवीपी बने हैं। बट लीडर बोर्ड पे क्या चेंजेस हुआ है,
वो देखना बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो यह फाइनली आ चुका है। देखिए 8 मैचेस बहुत सारे क्लब्स के ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसपे से एफसी गोवा की बात तो करें तो एकदम टॉप पे है। बट आज जो मैचेस हुए उसमें से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड मुंबई सिटी एफसी स्पेशली दोनों के दोनों अपना जो है एक बहुत ज्यादा शानदार गेम प्ले दिखाए हैं। बैंगलोर एफसी इधर थे थर्ड पोजीशन पे, बट उनको नीचे ढकेला गया है क्योंकि आज मुंबई सिटी एफसी उनको हरा दिए। लेकिन देखिए इधर ये पूरा का पूरा जो अभी के लिए स्ट्रक्चर है, ये जो फिक्सचर है, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिखेगा कुछ ही दिनों के अंदर। एंड बहुत ज्यादा शफलिंग देखने के लिए मिल सकते हैं हम लोग इस पूरे पॉइंट्स टेबल पे। Yeah, now this makes things a lot more exciting, right? Especially in the bottom order when now these clubs are drawing a draw when getting a draw when they needed a win. And how are things going to change? Because we still have so much more FIFA left, and suddenly it's kind of getting a little opened up right now in that bottom half. Who is going to be that fifth and the sixth club that makes it to the playoffs? That's the big question over here, folks. But what a day it was! You know, some beautiful cracker of games. Bengaluru FC losing 2 games back to back, Kerala Blasters FC getting a draw, and well, with so much drama already getting on, it's so difficult to say what's going to happen in the playoffs. But folks, we are finally done with all the games for the evening. We're going to be calling it a night. See you tomorrow again. Till then, you guys take care and have a good night. Go!